Good morning, students. Today we will discuss about some concepts which are used in the numerical problems. As we know that the resultant amplitude R is equal to square root of a square plus b square plus 2ab cos of phi. This is the resultant amplitude of interference. Yesterday we have discussed about the constructive and destructive interference, the conditions for constructive and destructive interference, the path difference for constructive and destructive interference. So, when interference is constructive, when interference is constructive, then cos phi is equal to 1. When interference is constructive, then cos phi is equal to 1. And R is equal to square root of a square plus b square plus 2ab cos of phi. This is equal to 1. So we will put the value of this is equal to 1. So this is equal to square root of a square plus b square plus 2ab, and this is equal to square root of a plus b whole square. Square से square cancel हो जाएगा. So we have r is equal to a plus b. So this is the value of r maximum. Maximum amplitude is equal to a plus b. As we know that intensity, maximum intensity, this is directly proportional to square of the amplitude. So इसको लिखेंगे r maximum square. Second thing is I maximum is directly proportional to, अब r maximum की वैल्यू आपके पास आ रही है a plus b. So we can write a plus b whole square. I maximum is equal to k into a plus b whole square. This is equation number 1. So we have I maximum is equal to k into a plus b whole square. When interference is destructive, when interference is destructive, then cos phi is equal to minus 1. When interference is destructive, cos phi is equal to minus 1. So r is equal to square root of a square plus b square plus 2ab into minus 1. So we can write it as a minus b whole square. So this is equal to a minus b. Okay. So r minimum is equal to a minus b. Now, as we know that I minimum is directly proportional to square of the amplitude, I r minimum. Okay. So I minimum is directly proportional to a minus b whole square. I minimum is equal to k into a minus b whole square. हमारे पास आ गया k into a minus b whole square. This is the equation number 2. Now divide 1 by 2. Divide equation 1 by 2. तो यहाँ पर आएगा I maximum over I minimum is equal to I maximum over I minimum is equal to k into a plus b whole square over k into a minus b whole square. K से k cancel. Okay. So we have a formula of I maximum to the I minimum. If W1 and W2 are the width of two slits from which the intensities of light I1 and I2, then in case of width we can write the formula W1 upon W2. This is equal to I1 upon I2, and this is equal to a square upon b square. So this is the formula for width. Okay. Now by using these formulas we can calculate the numericals. Now we will discuss some numericals. Now question number 1 is
light waves from two coherent sources of intensity 81:1 produce interference. Calculate the ratio of maxima and minima in the interference pattern. So we have given two coherent sources of intensity 81:1. इसको हम कैलकुलेट करेंगे. We have the ratio of intensity, that is I1 upon I2. This is equal to, we have formula I1 upon I2, this is equal to A square upon B square. This is equal to कितना दिया हमारे पास, गिवन है 81 upon 1. सो मेरे पास आप आएगा I1, देखो I1 I2 का फॉर्मूला था A स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, हम इसको यूज़ करेंगे, इन दोनों को यूज़ करेंगे. सो वी हैव A स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन 1. सो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर हमारे पास आएगा A ओवर B इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 9 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1. सो A is equal to 9B. ओके, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न. अब इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. I मैक्सिमम ओवर I मिनिमम इज इक्वल टू A प्लस बी होल स्क्वायर ओवर A माइनस बी होल स्क्वायर. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यूज. हमारे पास आएगा A की वैल्यू आपके पास आ रही है 9B प्लस बी को एज इट इज रहने देंगे ओवर होल स्क्वायर. 9B minus B whole square. This is equal to 9 plus 1 10, 10B whole square, 10 times 100 B square over 9 minus 1 8 B square, 8 is the 64 B square. So B square cancel out each other. We have I maximum over I minimum. This is equal to 20 is equal to 100 over 64. 100 ओवर 64. अब इसकी कटिंग करेंगे हम. 4 से 25 4 जा 16 4 जा, तो दिस इज इक्वल टू 25 अपॉन 16. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज लाइट वेव फ्रॉम two coherent sources having intensities I and 2I cross each other at a point with a phase difference of 60 degree. What is the resultant intensity at this point? So here we have given I and 2I are the two intensities. इसको करेंगे start. Question is I1 is equal to I and I2 is equal to 2I. And angle दिया हमारे पास theta is equal to या phi is equal to 60 degree. Now we will apply the formula. R is equal to amplitude का formula आपके पास आएगा A square plus B square plus 2AB cos of phi. Okay, so we have R is equal to R square is equal to A square plus B square plus 2AB cos of phi. Now we will put all the values. We have, as we know that intensity जो है उसका फॉर्मूला आपके पास आता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्प स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. ओके, नाउ इंटेंसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, इसको हम लिखेंगे आई आर. दिस इज इक्वल टू, अब आई आर को जो हमने एम्पलीट्यूड रिज्यूम किया, दिस इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड, दिस इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड, सो वी कैन राइट इट एज, जिसको हम लिखेंगे आई वन स्क्वायर. आई वन सिंपली आई वन आएगा यहाँ पे प्लस this is equal to I2 because amplitude square is equal to intensity. This is square of the amplitude को हम IR लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम I1, इसको लिखेंगे हम I2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 cos of phi. Now this is equal to I1 प्लस I1, I की वैल्यू जो आई है वो I1 है, I1 की वैल्यू I, I2 की वैल्यू आपके पास है 2I प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I इंटू 2I cos of 60 डिग्री. ओके, सो दिस इज इक्वल टू I प्लस 2I 3I प्लस यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 इंटू 2I स्क्वायर इंटू cos ऑफ 60 डिग्री. दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे
1/2, so 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3i प्लस i √2. So value of √2, this is equal to, taking I as common, so we have 3 plus √2. This is equal to, if we put the value of I, that is √2, that is 4.142 something, जो भी आती है आपके पास. So this is equal to, उसको सॉल्व कर लेंगे हम. इसकी जो वैल्यू होती है 1.414 आएगी, तो यहाँ पे आएगी 4.414i. ओके, so this is the required answer of the given numerical. So students, I hope you all understand this topic. Next topic we will discuss in the next lecture. Thank you very much.